Hey guys, Adbay here again, and today we'll be going over the metabolism of VLDLs, LDLs, and HDLs. So all three of these are lipoproteins, and a quick overview was that there are four types of lipoproteins: chylomicrons, VLDLs, LDLs, and HDLs. We've already discussed the metabolism of chylomicrons, तो आज हम ये तीन बाकी करेंगे. और one thing that would be very helpful for you is that आप इनको इस तरह imagine करें कि these three lipoproteins are all equally important characters इन स्टोरी और एक दूसरे के रोल्स को सप्लीमेंट और सपोर्ट करेंगे. ठीक, तो कीपिंग दैट इन माइंड, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद VLDLs. These are synthesized in the liver, and their function is to carry triglycerides of hepatic origin to extrahepatic tissues. The newly synthesized or nascent VLDLs contain only apoprotein B100, and in circulation it acquires apoprotein C and E from HDL, and it is converted into its active VLDL form. अब दोबारा जो मैंने स्टोरी वाला सिनेरियो की बात की थी, तो हमारा जो HDL का कैरेक्टर है, इट सपोर्ट्स VLDL का फंक्शन बाय सप्लाइंग इट विद apoprotein C and E. ठीक, अब lipoprotein lipase is an enzyme which we've covered in chylomicron metabolism, and one thing that you'll notice is that VLDL metabolism and chylomicron metabolism is very similar. तो अगर आपको chylomicron की वीडियो समझ में आ गई थी तो इसमें भी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होगी. It's just couple of things here and there which are changed. The lipoprotein lipase is activated by apoprotein C2 and phospholipase in VLDLs this time, and these triglycerides in the VLDLs are hydrolyzed and broken down to free fatty acids which are taken up by the tissues for their functions. जब हमारे triglycerides लूज हो जाते हैं तो apoprotein C from VLDLs is transferred to HDLs. अब जो हमारे VLDL है वो बन जाता है VLDL remnants, or we also call them IDLs or intermediate density lipoproteins. About 40 to 60% of these IDLs are taken up by the liver via apoprotein E specific receptors, और यहाँ इनकी breakdown होती है, and the remaining amount of remnants transfer the apoprotein E to HDL, and the VLDL remnants are converted to LDLs. तो अगेन वो स्टोरी वाला सिनेरियो दोबारा आ जाए तो हमारा VLDL कैरेक्टर indirectly forms LDL by first making IDL and then LDL. LDL के टॉपिक पे ही बात करते करते let's move on to LDLs, which is synthesized from the circulating IDLs, and it only contains one type of apoprotein B100. अब इसका फंक्शन ये है कि it transports the cholesterol from the liver to other parts of the body where it is needed, and इसी वजह से इसको हम bad cholesterol भी कहते हैं, क्योंकि the amount of LDL is reflective on the amount of cholesterol, and अगर आपका ज़्यादा LDL हो तो कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा, और ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल आपके बॉडी में डेट्रीमेंटल होता है क्योंकि it can lead to different type of health conditions like atherosclerosis वगैरह. तो अब हमारे पूरे बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, a lot of these cells have LDL receptors which bind to the apoprotein B100 and form an LDL receptor complex. These LDL receptor complexes then enter the cell via endocytosis, और यहाँ आपके lysosomal enzymes जो सेल के अंदर हैं वो apoprotein B100 और cholesterol esters को हाइड्रोलाइज कर देंगे. अगर आपको ये याद नहीं कि cholesterol esters थे क्या, तो basically they're just the form of cholesterol in which these lipoproteins all carry cholesterol. ठीक, अब obviously because apoprotein B100 protein है तो it's hydrolyzed into amino acids, and cholesterol esters are hydrolyzed into free cholesterol, और ये free cholesterol is then used by the cells. जब आपके LDL पूरा यूटिलाइज हो जाता है तो रिसेप्टर्स फारिग हो जाते हैं, and then they return back to the cell membrane. And one thing that is pretty important that you should need to know is that जैसे जैसे आपकी कोलेस्ट्रॉल की नीड सेल्स की बढ़ते जाएगी, उसके साथ साथ ही सिंथेसिस और एक्सप्रेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स ऑन द सेल भी इंक्रीज होगी. दिस आल्सो होल्ड्स ट्रू फॉर द ऑपोजिट सिनेरियो, जिसमें जैसे जैसे आपकी कोलेस्ट्रॉल नीड कम होते जाएगी बाय द सेल्स, सिंथेसिस और एक्सप्रेशन ऑफ LDL रिसेप्टर्स भी कम हो जाएगी. नाउ वी कैन मूव ऑन टू HDLs. अब HDL की सिंथेसिस कहाँ होती है? HDL is synthesized in the liver and the intestine, और एक और जगह जहाँ से एक और फॉर्म जहाँ से HDL सिंथेसाइज होता है is when the surface phospholipase and apoprotein A1 of the chylomicrons are lost when the triglycerides of these
two triglyceride carrying molecules are hydrolyzed. ठीक, तो ये phospholipids and your A protein A1 is basically your content of the nascent HDL. Coming to that, your nascent HDL is also called pre-beta 1 HDL, और ये disc shaped होता है, and it only contains A protein A1 and phospholipids. It later acquires A protein C and E in the circulation. अब इसका फंक्शन ये है कि it picks up free cholesterol from the tissues and macrophages, और इसी वजह से हम इसको गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली व्हेन यू आर डिक्रीजिंग द कोलेस्ट्रॉल कंटेंट तो आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बेहतर हो रही है. नाउ दिस पिकिंग अप प्रोसेस is facilitated by certain membrane transporters, your ABCA1 and ABCG1, and both of these promote the efflux or release of cholesterol from macrophages. अब ABC1 is more important क्योंकि इसका एक और specific function है, which is that it facilitates the transport of your cholesterol from your cells to your HDL. ठीक, अब HDL के ऊपर एक specific और very important enzyme है, which is lecithin cholesterol acyl transferase और LCAT for short. अब ये आपके कोलेस्ट्रॉल को एस्टरफाई करता है and it moves it to your HDL core. अब जैसे जैसे आपका कोलेस्ट्रॉल एस्टर कंटेंट इंक्रीज होता जाता है, the HDL becomes spherical, और अब इसको HDL3 कहा जाता है. And now the most easy way to remember the shapes and the changes in shape और ये किस तरह हो रहा है is that you imagine a deflated balloon. अब deflated balloon dish shape में होता है. जैसे जैसे आप उसमें हवा भरते रहेंगे, इस केस में कोलेस्ट्रॉल एस्टर भरते रहेंगे HDL के अंदर, तो वो फ्लैट डिश शेप बलून ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा, इंक्रीजिंग इन साइज एंड बिकम स्फेरिकल. ठीक, अब व्हेन देयर इज फर्दर एनलार्जमेंट ऑफ योर HDL3, क्योंकि मोर कोलेस्ट्रॉल अब्जॉर्ब हो रहा है और फिर इसको हम एस्टरफाई कर रहे हैं वाया LCAT, तो ये HDL2 बन जाता है. तो फर्स्ट वी हैड योर नेसेंट HDL, फिर HDL3 एंड देन HDL2. थोड़ा सीक्वेंस में इट्स काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूअस बट आसान है, 1 3 2 याद कर लें. Now, as your cholesterol ester content in HDL2 also increases, अब क्या होता है कि आपके cholesterol ester particles are exchanged for triglycerides with triglyceride containing particles, specifically LDL and VLDL. और ये जो process है, this is mediated by your CETP or cholesterol ester transfer protein. This is an important enzyme, और ये actually it's very easy to remember क्योंकि इसका function इसके नाम में, because it's transferring your cholesterol esters from your HDL2 to your triglyceride containing particles. So now your transferred cholesterol is metabolized as part of the lipoprotein to which it was transferred पहले, and your cholesterol esters जो HDL में है, they are taken up by the liver via scavenger receptors, specifically your SRB1 receptor. अब जो HDL2 में triglycerides हैं, these are hydrolyzed by hepatic lipases to regenerate HDL3. अब ये HDL3 को दोबारा सर्कुलेशन में डाल दिया जाता है and it acquires more free carbon from tissues with excess carbon, और ये फिर HDL3 HDL2 का साइकिल चलते रहता है. Now this is a very good diagram which I took from Kaplan, और ये basically summarize करता है the whole process and we can just go over it quickly ताकि summary मिल जाए. ठीक, तो सबसे पहले your liver produces VLDL, ये इसके contents हैं EC2 and B100. This supplies triglycerides to your adipose tissues and muscles जो आपके थे via lipoprotein lipase, और ये इसके remnants जो हैं are IDLs containing lipoprotein A protein E and B100. अब ये IDLs कुछ half of these get reabsorbed by the liver via your apoprotein E specific receptors, and almost half of them get converted to LDL जिसमें सिर्फ आपका apoprotein B100 है, और ये LDLs फिर obviously supply cholesterol to your other extrahepatic tissues. अब जो HDL है, this is released via liver and small intestine, इसमें A, C and E है specifically apoprotein A1 और phospholipids भी, और इसके ऊपर जो LCAT है वो if you remember, it acidifies your cholesterol and it turns your nascent HDL into your HDL3 and then HDL2, और जैसे जैसे HDL के कंटेंट कोलेस्ट्रॉल एस्टर का कंटेंट बढ़ता जाता है,
तो HDL becomes rich in cholesterol esters, और फिर ये CETP काम आता है, which is your cholesterol ester transfer protein, and this exchanges your cholesterol ester with triglycerides from your VLDLs and IDLs, your triglyceride containing particles. I think I made a mistake पहले, उसमें IDL लिखना चाहिए था, not LDLs. Please just correct that. और फिर जो आपका HDL जो बच जाता है, that delivers cholesterol to your liver and other steroidogenic tissues via your scavenger receptor B1. And that's pretty much your summary. इसके अलावा I would love for you to look at this table once again, and so you can appreciate this because now we've done all of these. अब क्योंकि chylomicrons are suppliers of triglycerides, तो सबसे ज़्यादा proportion of triglycerides इसमें होती है, and because your HDL supply cholesterol and also you carry phospholipids, तो इसमें अच्छी decent proportion है, because your LDLs are transferring cholesterol, तो इसकी cholesterol proportion सबसे ज़्यादा है, और क्योंकि IDL is basically an intermediate या a middle ground between VLDL and LDL, तो इसके ज़रा mixed proportions होते हैं like VLDL and LDL, और VLDL भी triglycerides transfer करता है, so it has a decent chunk of triglycerides. And that's pretty much it, and that's all you need to know. So I hope you understood it, and I'll see you in the next lecture. Thank you.